Then we started going into the rural areas of Pakistan and realizing that the rural situation is very common, very bitter. We have to done a lot of work in health, so we started doing the health intervention in those areas. Then we realized that the education is also very important. So hence joined with the education program, and the education program started with doing intervention in the literacy of the young boys and the girls. Similarly, poverty elevation and the model of rural development has developed. Since then, we are striving for developing 30,000 model communities throughout Pakistan, through our 33 branches, intervening 53 districts of the country, starting from Chitral to Karachi, and trying to bring this community development model in one sector of community, one village and one settlement. This is health, education, livelihood, infrastructure, water and sanitation. Because we consider that these are the basic rights of the people of the Pakistan and the poorest and the remotest people of Pakistan, so that their basic right must established, then the human resource development can be occurred. And now comes to the disaster. When there was disaster in Kashmir on 8th October 2005, as many of speaker has said already, we on nearly 12th October, we realized that we have to respond to this disaster, because our people in Kashmir and the KP, they are really affected a lot. So one small team of hands departed Karachi on 12th October 2005, and I was leading that team as one of the medical doctor and having orthopedic experience. And as said by one of colleague here, speaker here, that at that time orthopedic or the fractures was really the disaster calamity or disaster effect at that time. So we went there. It's a very interesting story and experience, because we were doing first time disaster response in any part of the country. What happened? We young doctors, they arrived there. We arrived at Badgram, one of the city of the KP, and then we went. Our chopper took us to one of the valley. Its valley name is Alai. Alai was cut off at that time with the rest of the KP. Alai एक बहुत ही small और खूबसूरत वैली है. अगर आप बडग्राम के पीछे की तरफ जाएं, लोग अब जो टूरिज्म के लिए जाते हैं उनके लिए भी ये बड़ी खूबसूरत वैली है. तो हमें एक चॉपर में बिठा दिया गया, धक्का देके बिठा दिया गया. We were not trained to even sit in a chopper or helicopter. So at that time, और usually जो disaster पाकिस्तान में बड़ी interesting fact ये भी है कि वो रमजान में आए हैं. ज़्यादातर बड़े disaster, if to talk about the 2010 flood, it was Ramzan, and 2005 earthquake was also Ramzan. So we were fasting at that time. हमें बिठा दिया गया. और रोड जब हिली एरिया में जो ट्रैवल करते हैं उनको पता है कि जब लैंडस्लाइड हो जाए तो रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं. तो रोड अलाई का ब्लॉक था. हम एक चॉपर के जरिए अलाई वैली में, जहाँ पे thousands of people were injured at that time, and no one could have rescued them because of this landslide. हमें वहाँ पे लैंड कराया गया. वहाँ पे जो हमसे पहले जो पार्टी पहुंची हुई थी वो सिर्फ आर्मी के कुछ रंगरूट थे, nearly 10 to 15, and they have landed there. They were trying to help out them, लेकिन without medical support, without health support कुछ भी नहीं हो सकता था. हमें वहाँ पे मेडिकल सपोर्ट के लिए गया, और इस वक्त कोई 7 दिन हो चुके थे, 6-7 दिन, जब हमने वहाँ पे लैंड किया. इस आज को एक आए हुए, और एक ऐसी स्टोरी है, इतनी दर्दनाक स्टोरी है कि जिन्होंने विटनेस किया शायद वही रियलाइज कर सकते हैं. व्हेन इट कम्स टू द डिजास्टर, जो नेचुरल कैलेमिटी डिजास्टर में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन की वजह से कैसे कन्वर्ट होती है डिजास्टर में, वो वहाँ पे देख के ही पता चलता है. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, वहाँ पे लोगों ने शौक में आके जो मिली से कमा के आए थे, मल्टीपल स्टोरी घर बनाए हुए थे. और जब वो तीनों फ्लैट्स हुए तो टनों सोना उनका और इंसानों की बॉडीज उसके अंदर एम्बेडेड हो गई. और वो क्योंकि वो हिली एरिया थे, वहाँ कोई मशीन नहीं पहुँच सकती थी इसको डेब्रिस रिमूव करने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने उस सोने को भी वहीं पे दबा रहने दिया. और जब नमाज जनाजा पढ़ी तो उस मलबे के सामने नमाज जनाजा पढ़ ली कि हमारे लोग इसमें दफन है. इस किस्म की सिचुएशन थी.
और वो जो वाहिद घर जो इंसान बनाते हैं अपने 20 साल 30 साल की प्रोडक्टिव लाइफ में, वो उस डिजास्टर का जिक्र होता है। तो वहाँ पे ऑर्थोपेडिक के बड़े केसेस थे और हमने उसको ट्रीट करने की कोशिश की। 6-7 दिनों में कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जो मेडिकल के लोग हैं वो समझते हैं कि मैगट्स पड़ जाते हैं वुंड में, वुंड इन्फेक्टेड हो जाती हैं, फ्रैक्चर में प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाना पड़ता है। वो सारी ऑर्थोपेडिक जो सर्जरी होती है वहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल थी वो वहाँ पर जाएगी। So this was the first experience of hand. Then there was a super flood in 2010, and here comes the once again a challenge for hands. So hands started working. Started from Kashmir, the upper part of Sindh and South Punjab. We started following the super flood. Super flood जिस तरह ऊपर से आना शुरू हुआ और जब सबसे पहले जो साउथ पंजाब में थोड़ी सी इफेक्टिव हुआ, लेकिन जब सिंध में एंटर हुआ सुपर वर्ल्ड वेरी डिजास्टर। और हमने और आई माई सेल्फ हैज विटनेस टू दिस सुपर फ्लड अगेन। किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स की डेप्थ, उसकी विड्थ और उसकी लेंथ जो है वो वाटर इज वाज एवरीवेयर इन द अपर पार्ट ऑफ सिंध। फर्स्ट कश्मीर से फिर जैकोबाद में एंटर हुआ, फिर वहाँ से जिस तरह दरिया सिंध जिस तरह रन करता है तो हम उसको फॉलो करते हुए खट्टा तक आए। और इस तरह हर डिस्ट्रिक्ट में हैंड्स ने बेताशा, पहले तो रेस्क्यू का काम होता है ज़्यादा कि जब हम काम करते हैं, यही वो ज़माना था कि जब वी हैव लर्न हाउ टू रियली हैंडल दिस काइंड ऑफ डिजास्टर। फिर उसमें रिलीफ का काम शुरू हुआ, अर्ली रिकवरी जिसको हम कहते हैं। अर्ली रिकवरी में वी हैव गिवन थाउजेंड्स एंड millions effectives to not only the shelter but also the hygiene kit, then the medical camp relief and then तो इसमें फिर हमने फिर रिहेबिलिटेशन का काम किया। दैट रिहेबिलिटेशन इज नाउ गोइंग ऑन टिल इवन टुडे। उसके बाद भी जो रेन फ्लड आए तो 2011 में, 2012 में, 2013 में, and then there's the earthquake in Awaran, Balochistan, and then very recently I am coming from Kashmir, Mirpur, और जहाँ पे earthquake ने अपनी तबाही मचाई हुई। So these are the disasters, and what we did by to learn from the disaster, that we have developed a resilient strategy within hand for the rehabilitation, for early recovery and rehabilitation. And in rehabilitation we have done, and my engineer Naeem Memon is sitting here. You can ask a technical question about the how a low-cost shelter can be a resilient shelter for thousands of people. And we have provided from 2005, 2010, maybe 85,000 families is now having those resilient shelters, and we have tested around in heavy rains and the flood that these very basic shelter of costing only 60,000, 250,000, 50,000 shelter can really be resilient and can protect people when there is disaster and then there is super flood, when there is earthquake. और बहुत ही सिंपल इंजीनियरिंग है जिसको हमने वहाँ पे करने की कोशिश की। एंड इफ यू हैव एनी टेक्निकल क्वेश्चन, नहीं। सिमिलरली when it comes to the education, we have rehabilitated thousands of schools, and nearly 3.5 lakhs children are enrolled in those schools at the moment. Then if it comes to the health facilities, medical facility in these areas, we are treating free of cost through our 35 hospitals, nearly 15.5 lakhs patients in a year time. Similarly, in water sanitation, we have given thousands of schemes to these modern communities and disaster-prone communities. And then, in case of the livelihood, we have a very extensive livelihood program for these as a part of our rehabilitation into these communities by giving interest-free loans and by giving the assets. And by giving the skill training, thousands of people, nearly 20,000 people every year get some kind of self-employment from hands, and this self-employment gives them livelihood and also resilient as a family. So these are the services of hand. I hope if you have any question about engineering part of the hands resilient shelter, hands resilient infrastructure, my engineer general manager Naeem Memon is sitting here, and if you have any question, the general manager disaster response Rahim Murray is sitting here. I am very thankful to all collaborators here, especially NAD University,
and students of NED University and the Vice Chancellor of NED University and all the colleagues who have contributed to conduct this seminar here. Thank you very much.